हाय स्टूडेंट्स केमिति अच्छो सब भल थी आशा करछि समस्ते फाइन थी एंजॉय करते घरे पढ़ापढ़ तो नहीं आगो तो स्टूडेंट्स टुडे विल डिस्कस अबाउट ए न्यू टॉपिक दैट इज HTML आम चैप्टर 1 बा यूनिट 1 ले नेटवर्किंग सारी देथिले नेटवर्किंग एंड इंटरनेट एप्लिकेशन 90% सरी थिला एंड यूनिट 3 RDBMS भी 90% कवर होइतिला बर्तमान रहा यूनिट 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट बेस्ड ऑन द जावा लैंग्वेज एंड द HTML इट इज वन टाइप ऑफ मार्कअप लैंग्वेज तो स्टूडेंट्स hypertext markup language HTML stands for hypertext markup language तो फर्स्ट ईयर पढ़ते जावा दैट इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मार्कअप लैंग्वेज तो व्हाट द डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड मार्कअप लैंग्वेज स्टूडेंट्स यू ऑलरेडी न्यू दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज is a set of instructions which are given to the computer to perform some actions. That is the programming language. The programming language, through the programming language, you are allowed to give some instructions or set of instructions so that you can set the program to the computer. That computer takes that program as its input. And as per your program, as per your instructions, computer performs some actions to give some results. That is the programming language. And programming language is compiled by the compiler or interpreter. Already you knew that what's the compiler and what's the interpreter. किटे मने पके दोजी compiler and interpreter both are language processor. The language processor works to convert high level language into low level language or machine level language. The high level language मुझे एटा सब फास्ट ईयर जानी थिलो तो मन पकोची आज टॉपिक ऊपर रिलेटेड ये गुडी तो हाई लेवल लैंग्वेज the language which is understandable by the human being. The high level language is built up of English alphabets, some special characters and some symbols you can say, which is human understandable. The human understandable computer language is known as the high level language. But this human understandable computer language, this the high level language or programming language is not directly understandable by the computer. The computer needs a separate type of or special kind of language which is written using only zeros and ones. That is known as binary language. The binary language is understandable by the computer. Directly computer or machine can understand this type of language, that's the binary language. That's why binary language is known as machine level language or that's the low level language. Binary language को convert करिया पाई whenever we write some programs using the C or C++ or Java whatever may be, this type of high level language should be converted into the binary language. And that binary language, for this conversion process there is a software, that software is known as language processor. The language processor is a सिस्टम सॉफ्टवेयर यू कैन से ऑलरेडी तुम डिफरेंशिएट जानछ सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर भितर द लैंग्वेज प्रोसेसर इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर व्हिच इज यूज्ड टू ट्रांसलेट्स हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज. दिस लैंग्वेज प्रोसेसर भितर आमे पाइबा दैट कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर. कंपाइलर इज वन टाइप ऑफ language processor which scans the entire program at a time and checks where is the error and reports to the user, and user
starts the debugging process, debugging the process to removing the error from the program. Already mu पढ़े जी खाली गोटे मने पके दो से कथा. तो compiler scans the entire program को scan करूचे and checks and finds where is the error in that program. And when the error is found by the compiler, it immediately reports to the user, and the user starts the debugging process. Means user remove that error from the language or from the program. After completion of the debugging process, after completion of the entire debugging process on the whole program, the compiler executes it to give you the results. This is the role of the compiler. And there is another type of language processor, that is the interpreter. Interpreter goes line by line. It means that interpreter checks the program line by line. If suppose in one line it finds the error, then it immediately goes to the user and waits after the completion, waits till the completion of the debugging process. जते पर्यंत debugging process complete है ही नहीं, अर्थात सही error टी erase करा जाए नहीं, सेते पर्यंत interpreter wait करिवो, and जेता debugging सरी जाउची, then interpreter goes to the next line. The interpreter executes the program, or interpreter interprets the program line by line, and compiler interprets the program or compile the program at a time, as a whole. It's at once. This is the compiler and interpreter. Interpreter and compiler are dedicated to compile this type of high level language, but this is not a high level language. This is a markup language, and this markup language is a collection of some millions of tags. There are huge amount of tags are there. क्या ना tags कौन हमें कहते हैं ताको tags. Using the tags, it is the collection of only tags and some syntax. Using the tags, the markup language is developed. This is special kind of HTML elements हमें कही परिवा ये tag गुड़ी को HTML elements. This HTML elements is known as the tags. Using the tag, the markup language is developed. So to compile this type of markup language, we don't need the compiler or interpreter. We need the web browser, any web browser. हमें जेकोनसी web browser नहीं कि तुम ऑलरेडी जानी थो वेब ब्राउजर को गुड़िक जपरिक आम इंटरनेट एक्सप्लोरर कहते गूगल क्रोम कहते मोजिला फायरफॉक्स, दीज आर द वेब ब्राउजर्स. तो वी नीड एनी काइंड ऑफ वेब ब्राउजर्स टू कंपाइल दिस मार्कअप लैंग्वेज. दिस इज the difference between programming language and markup language. And one thing, programming language is dedicated, or programming language is used to perform a action, but markup language is used to present some information only. So it decides the structure of the web browser. It facilitates the structure of the web browsers. And markup language is used to represent some informations in a such a way that is acceptable by the users, or user friendly manner रे आमे किसी डाटा बा information को present करिवा purpose रे आमे markup language को use करछंदी, whereas programming language को आमे use करछंदी किसी action को perform करिया पई, किसी काम करिया पई. And why name is hypertext? Hypertext. Student, you already knew the different kind of data. One is text data. Text data based on alphabets and numeric. That's alphanumeric, you can say. Numeric. Alphabets and numerics. Collection la hame gote data create करछंती, that is the text data. And other kinds of data are like image is also a data, audio is a data, video is also a data. These are different kinds of data, but particularly this markup language is based on this text data. आमे XML बाबद रे जाउनांती
DHTML बाबद पढ़ुना डायनेमिक मार्कअप लैंग्वेज विषय पढ़ुना स्पेशल में मार्कअप लैंग्वेज विषय पढ़ुं दैट इज द HTML पढ़ुं HTML टोटली बेस्ड ऑन द टेक्स्ट डाटा तो टेक्स्ट डाटा इज कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स एंड न्यूमेरिक्स दैट्स अल्फा न्यूमेरिक डाटा and why name is hyper names hypername indicates the web pages. The web pages are known as hypertext document. All type of web pages or pages were available in websites. Different type of pages, billions of pages are there in a website. This individual page, each page is known as a web page, and that is also known as hypertext document. To develop such type of web page, we need this type of language, HTML. That's why its name is hypertext markup language. To develop hypertext document, we need hypertext markup language. That's why its name is hypertext markup language. The hypertext markup language a programming language भितर मु डिफरेंशिएट करूची ए क्वेश्चन आसे डिफरेंशिएट बिटवीन HTML एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आम डिफरेंशिएट करिया मार्कअप लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज One is markup language, one is programming language. So first point is markup language is used for annotating the text in a manner which is different from normal text. Second point, this language is used to facilitate the structure of a web page. Third point, this language is compiled by any web browser. Fourth point, it is used to present the data. Fifth point, it doesn't performs any action. एपटर देखा वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज is collection of some
instructions which is written by any programmer. Two, it is compiled by compiler or interpreter. Three, it is used to perform an action or task by the computer. Four, एग्जाम्पल आम नहीं पारे कि सी सी प्लस प्लस जाभा इटीसी यार एग्जाम्पल भितर आम देपर ये एग्जाम्पल मुझे लिख दूचे HTML XML DHTML these are markup language, this is programming language. The markup language are basically used to develop a web page at first, second navigate the internet, or to develop a game software. For this purpose we use the HTML hypertext markup language. Students, I already told you that the markup language is the collection of some HTML elements. That HTML elements are known as HTML elements. तो आम कौन कहते हैं दिस HTML elements are known as tag. ताको आम कहते हैं tag. गोटे मो प्रोग्राम लिखुची HTML प्रोग्राम गोटे करुच्ची देखियो देखला पर लाइन बाय लाइन बुझेगा. गोटे HTML ले आम टैग फास्ट टैग नंते दिस डॉक टाइप ने नौचंदे देन आछे हमर HTML देन head within head you can get title for title पे दो my first HTML document, then slash title, next slash head, then we start the body. Within body I give one tag that is h1, my first program, first HTML program, slash h1, then p paragraph भितर लिखा hello HTML world, then slash p, then slash body, and last I can close this HTML using the HTML slash HTML tag. So every tag is written or every tag
is enclosed by a pair of angular bracket. ये भले गोटे angular bracket दिया हितो. Using that angular bracket, some text are there like head, title, body. These are known as the tag. HTML बा वेब ब्राउजर ताको एज्यूम करिवो जे गुडे गुडे टैग जे गुडी जदी आमे ताको एंगुलर ब्रैकेट भीतर रखिथिवो. And some tags are known as the pair tag and some tags are known as the unpair tag. Pair tag जेता आमे कहउछंदी जे head आमे लिखुछंदी. The head tag starts from this tag. एई भली tag रू by head section by head tag starts from using this element and it closes browser by compiler एठी assume करिवो this is the close of the head tag. The head tag starts from this by head tag starts from this element HTML elements and it's closed by this slash head. Slash indicates the end of the tag. This slash indicates the end of the tag, end of the element by end of the HTML element कहि परिया बा तब हम tag बोली कहि परिया. This slash indicates. तो here आमे देखुछन गोटे हेड टैग रहउछ एवं स्लैश हेड टैग रहउछ ताले एकटा को आमे पेयर टैग बोली कहि परिया. किंतु किछि जागा रे जेपरि हम कहउछन बीआर गोटे टैग लउछन ब्रेक द लाइन ब्रेक करबे जेतला आमे गोटे न्यू लाइन क्रिएट करछन गोटे लेख सारले तापर न्यू लाइन क्रिएट करछन न्यू लाइन क्रिएट करिया पई हमको बीआर टैग यूज करिया पड़ियो. सपोज मु या परे न्यू लाइन टे क्रिएट करथान जेबो एट लिखथान बीआर तो बीआर रो सबडा नाही स्लैश बीआर एक कथा नाही तो एटा को आमे अनपेयर टैग बोली कहि पारि यार पेयरिंग नाही. तेणु HTML भीतर आमे किछि पेयर टैग पाइबा किछि अनपेयर टैग पाइबा. पेयर टैग जस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम दिस जस्ट एंगुलर ब्रैकेट भीतर थिवो हेड टैग टाको आमे एठो स्टार्ट करछोंदी एवं स्लैश जेता आमे दोचोंदी जेकोन जगह आमे स्लैश दोचोंदी एठी देखो तो टाइटल स्लैश टाइटल तो टाइटल इज ए पेयर टैग एंड टाइटल टैग स्टार्ट्स फ्रॉम दिस टैग्स एंड क्लोज द टाइटल जो फंक्शन टिको बा टाइटल मेकानिज्म टा बा टाइटल काम जहाँ अच्छी इट स्टार्ट्स फ्रॉम दिस टाइटल टैग एंड इट एंड्स विथ दिस टाइटल टैग. तो यहाँ को लाइन बाय लाइन आम बुझेबा जीवा कौन से कौच ये स्टूडेंट लक्ष्य कर यू एति गोटे पार्ट नौ ये गोटे पार्ट यहीटा गोटे पार्ट एति बाट पर्यंत अप टू हेड. दिस इज हेड सेक्शन ऑफ द HTML program and this is container part or you can say this part is the body section of the HTML program. तो HTML प्रोग्राम को आम क्लासीफाइड कर दुईटा सेक्शन आम क्लासीफाई कर एंटायर HTML प्रोग्राम इज क्लासीफाइड इनटू टू सेक्शंस. वन इज हेड सेक्शन एंड वन इज बॉडी सेक्शन. हेड सेक्शन और बॉडी सेक्शन. हेड सेक्शन कौन रखुच्च आम HTML रखुच्च हेड रखुच्च टाइटल रखुच्च स्लैश टाइटल टैग यूज कर एंड स्लैश हेड टाइटल यूज कर. जो HTML रे जो हेड टैग भीतर आम जहाँ लिखुं केवल यहीटा ही आम जो ब्राउजर खोलवानी कि जो वेब पेजटा को ब्राउजर खोलिया से ब्राउजर रे जो टाइटल बार ऊपर केवल लिखाई थो माय फास्ट HTML डॉक्यूमेंट किंतु यहीटा शो हम ना हेलो HTML वर्ल्ड बा माय फास्ट HTML प्रोग्राम यही कथा गुड़िक शो हम ना जो टाइटल बार ऊपर. तो जोटा भिजिबल पार्ट ऑफ दी वेब पेजेस भीतर जोटा भिजिबल होचे आमे देखि पारछंती ऑल भिजिबल पार्ट ऑफ दी वेब पेजेस शुड बी रिटन विद इन दैट बॉडी सेक्शंस. ए बॉडी सेक्शन भितर आमे वेब ब्राउजर सॉरी वेब पेजेस भितर जो गुडी हमको भिजिबल होचते आमे जोटा आमे पढ़ी पारछंती देखि पारछंती ए सब गुडी को आमे ए बॉडी सेक्शन भितर रखिबा. तो बॉडी सेक्शन इज आल्सो नोन एज द भिजिबल सेक्शन. एटा को आमे कहबा भिजिबल सेक्शन ऑफ द HTML प्रोग्राम. तो from HTML to slash head or you can say this part from head to slash head this part is known as the head section and body to slash body this part is known as the body section. The body section is the visible part of the HTML but head section only contains the title and this title
is visible on the title bar of the से जो pages रो ना कर रखचंदी से title bar of the web pages भितरे आमे केवल एटा ही देखि परिबा किंतु आमे जहाँ ताकुतरे से वेब पेजेस रो कंटेंट गुडी को आमे ए बॉडी सेक्शन भितर रखिया पड़ियो कारण बॉडी सेक्शन भितर आमे न रखिले आमे कंटेंट गुडी किछ विजिबल हबो नै देहिति पे आमे बॉडी सेक्शन कोचंदी द विजिबल सेक्शन ऑफ द एचटीएमएल प्रोग्राम इज द बॉडी सेक्शन ताले एठी आमे एचटीएमएल प्रोग्राम टाको एंटायरली एचटीएमएल प्रोग्राम को दी भाग कर देले गोटे हेड सेक्शन कर देले गोटे बॉडी सेक्शन कर देले एबे लाइन बाय लाइन जिबा आमे बुझिबा कोन से कहूची एट देखो डॉक टाइप स्लैश by exclamatory mark डॉक टाइप exclamatory mark डॉक टाइप से कौन कहूँ ना it refers the versions of HTML particularly HTML5 version को ये refer करछि HTML5 ये गोटे versions HTML डेवलप होइछि गुडा तार विभिन्न versions डेवलप हेइ आछि मॉडिफाइड हेइ नुआ नुआ फीचर्स बा फैसिलिटीज या भीतर इंक्लूड करा हेछि तेणु HTML5 version गुटे अछि ताने डॉक टाइप एई जो टैग ता दिस एलिमेंट दिस HTML एलिमेंट indicates the which versions we are going to use आमे को वर्सन टी यूज करबा चाहउछंदी एइटा ही इंडिकेट करछि ताने डॉक टाइप को जदि आमे ओमिट कर दोछंदी प्रोग्राम भितर जदि आमे एक्सक्लेमेटरी मार्क डॉक टाइप लेखु ना ताले हम प्रोग्राम भितर कोनोसी प्रभाव पड़िबो नै से प्रोग्राम रनेबल हो पारिबो रन हो पारिबो एग्जीक्यूट हो पारिबो आमे तार रिजल्ट पाई पारिबो बट आमे लेखि देले ये हबो जे इट इंडिकेट्स द व्हिच वर्जन्स एचटीएमएल आमे यूज करछंदी सेटा ही इंडिकेट करछि देन एचटीएमएल এই जो टैगटा कौन करछि ना दिस इज द रूट ऑफ द एचटीएमएल टैग जदि एई टैगटा को हम ओमिट करिया इफ यू ओमिट दिस टाइप ऑफ टैग एचटीएमएल टैग से कौन हबो जे यार कंपाइलर जे ब्राउजर चिन्हि पारिबो नै एटा होछि को प्रकार प्रोग्राम तो एचटीएमएल प्रोग्राम शुड बी स्टार्ट्स फ्रॉम द एचटीएमएल तमे जदि एइटा को ओमिट कर दो तो चलिबो किंतु एचटीएमएल प्रोग्राम में एचटीएमएल टैग नु स्टार्ट करिया पड़ियो इफ यू ओमिट दिस एचटीएमएल टैग देन वेब ब्राउजर कुडंट टू अंडरस्टैंड व्हिच प्रोग्राम इज दिस व्हाट टाइप ऑफ प्रोग्राम इज दिस तेणु HTML tag is known as the root element of the HTML. Root element. This is known as the root element of HTML. तो HTML डॉक्यूमेंट भितर आम गोटे HTML डॉक्यूमेंट लिखुं इन HTML डॉक्यूमेंट दैट डॉक्यूमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम शुड बी स्टार्ट फ्रॉम HTML टैग एंड दिस HTML टैग इज नोन एज द रूट एलिमेंट ऑफ HTML डॉक्यूमेंट एंड दिस HTML टैग शुड बी क्लोज्ड यूजिंग दिस स्लैश HTML. This slash HTML indicates that this is the end point of the document. एई जदि slash HTML न दबा ताहले ब्राउजर जानि परियनि केउठारे से प्रोग्राम टी क्लोज होउछि तेणु आमे दि प्रोग्राम स्टार्ट्स फ्रॉम HTML डॉक्यूमेंट स्टार्ट्स शुड बी स्टार्ट्स फ्रॉम HTML टैग एंड शुड बी क्लोज्ड यूजिंग द स्लैश HTML स्लैश ऑलरेडी मु तुम कहि जे स्लैश सिंबल टा को इंडिकेट करछि एंड ऑफ द प्रोग्राम बा एंड ऑफ द टैग आमे एंड ऑफ द प्रोग्राम कहि परिया बा एंड ऑफ द टैग कहि परिया देन HTML tag starts from HTML and should be closed with slash HTML tag. This HTML tag is known as the root element of HTML tag. Already I told you. Then I'm come to the point head. This head tag contains the title of the document. तो हेड टैग जदि आम न दौरान ताले गोटे हूँ टाइटल बार रोचे गोटे वेब पेजेस भितर तुम देख वेब पेजेस भितर इधर गोटे वेब पेजेस रहा वेब पेजेस यही सैड्रे गोटे टाइटल बार थी वेब पेजेस नेम टाक मेंशन हो से जगह तो टाइटल बार टाक आम ओमिट करदे तो हेड सेक्शन को जब आम ओमिट कर टाइटल बार आम टाइटल देखिपर ना वेब पेजेस जो टाइटलटा आम देखते से टाइटल आम देखिपर ना तो हेड सेक्शन is the element which contain the title tag. तो टाइटल टैग जब आम यूज करिया पड़ो ताले हेड सेक्शन भीतर यूज करिया तमे कहबे तो सर आम हेड सेक्शन को माइनस कर दवा हेड आउ स्लैश हेड को माइनस कर दे खाली टाइटल लिखिबा नॉट पॉसिबल देन टाइटल टैग शुड बी रिटन विद इन द हेड एंड स्लैश हेड द हेड टैग contains it is the head of the tag, it is the head of HTML document. आप कह परिया it is the head of HTML document. The head of the HTML document indicates that it contains the title bar. It contains the title. And this head section starts from head tag and it is closed in
it close with slash head, slash indicate the end, then it is a pair tag. आम जमी HTML गोटे pair tag कहले ये HTML स्टार्ट होता स्लैश HTML अच्छी यार स्टार्टिंग अच्छी यार क्लोजिंग अच्छी अर्थात ओपनिंग टैग गोटे अच्छी आ गोटे क्लोजिंग टैग अच्छी से भाई भाव हेड स्टार्ट्स फ्रॉम दिस टैग एंड इट्स क्लोज्ड स्लैश हेड टैग, तो इट इज द ओपनिंग टैग, इट इज द क्लोजिंग टैग. विद इन द हेड वी कैन राइट डाउन the title tag. The title tag contains the visible part or the visible title bar which is displayed in the web pages. Web pages रो title bar भितर जहाँ हमें display करूँ जहाँ हमें देखुँ ये जहाँ हमें लिखिबा hi welcome लिखिबा my first web pages लिखिबा कि मैं मुझे लिखिबी review on HTML जहाँ से web pages भितर हमें रखुँचंदी तार जदि title कुछ दबाव चाहूँचंदी केवल compiler जानिया ताहले टाइटल टैग आम यूज कर. तो टाइटल टैग कंटेन्स द टाइटल ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट. एटा क्लोज है बर्तमान हेड टाइटल हेड स्लैश हेड आ टाइटल स्लैश हेड एति भीतर हमर हेड सेक्शन टा क्लोज है. एबे आसीबा बॉडी सेक्शन. बॉडी सेक्शन इज द मेन पार्ट ऑफ द HTML प्रोग्राम. आम जहाँ भी लिखुचंदी जहाँ गुडी को आम वेब पेजेस विषय विजिबल करिया पई चाहूचंदी ये सब गुडी बॉडी सेक्शन भीतर लिखिबा. तो बॉडी टैग इज आल्सो ए पेयर टैग. देखो एटी बॉडी रो स्टार्ट होची स्लैश बॉडी रे क्लोज होची ताले यार गुटे पेयरिंग अछि. Then body tag is the I mean container part of the HTML program. HTML program रो container part जदि देखिबा the entire documents should be written within that body tag. The body elements starts from this tag body tag and it's close with slash body tag. And within that I write here h1. ये जो h1 होची heading size. H1 टा अच्छी गोटे H1 अच्छी H2 अच्छी ये भाव में आम देपर H6 पर्यंत अच्छी. H1 H6 एगुड़ी डिसाइड करे साइज ऑफ द आम केते बॉर्डर लिखा चाहते आमर जो लेखाटा आम जो लिखुते माई फास्ट HTML प्रोग्राम ये लेखाटा केते बड़ साइज हवा दरकार फॉन्ट तार साइज फॉन्ट साइजटा केते हवा दरकार. ताने H1 स्टार्ट करछि स्लैश H1 ले क्लोज करिछि ताले दिस H1 टैग इज द हेडिंग पर्पज. आम हेड कथा कहूनी एटा हूँ हेडिंग पर्पज अर्थात हेडिंगटा आमर केते साइज रोचे दैट्स डिपेंड्स ऑन द आवर 1 to 6 भितर डिपेंड करुच्ची. देन पी इज आल्सो ए पेयर टैग एंड इट स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ टैग. आम गोटे नुआ पैराग्राफ क्रिएट करछंती. पैराग्राफ कहले कोन बुझे जे आम गोटे लेखिक चली लेखा चलछि लेखा भितर मल्टीपल स्पेसेस जदि दउछंती तेण पुण गोटे लेखा चलछि आम एटा कहउछंती गोटे पारा. तर पैराग्राफ टैग allows to insert the multiple space in between two lines. दीटा लाइन भितर जता मल्टीपल स्पेस इंसर्ट करिया चाहूचंदी सेतला हमें पैराग्राफ टैग दे परिया. पैराग्राफ टैग इज आल्सो ए पेयर टैग. तो पैराग्राफ भितर हम लिखली हेलो HTML वर्ल्ड स्लैश p. दिस इज HTML टैग. तो आम एठी जदि गोटे प्रोग्राम लिखिबा राइट ए प्रोग्राम और टू डेवलप ए वेब पेजेस which contain your address जे तुम एड्रेस को कंटेन करी रखुची तो आम कौन लिखिपर कि से प्रोग्रामटा लिखा डॉक टाइप हेड देन टाइटल देले माय एड्रेस slash title then slash head then we start the body भितर आम रखा the head दवा heading हाँ my profile H1 या भीतर गोटे पैराग्राफ स्टार्ट करें ना आम इमिति भी लिखिपर H2 बा H3 रे दे परिबा. H3 at Soro स्लैश H3 न्यू लाइन जब क्रिएट करा चाहते ये BR दबा BR ब्रेक लाइन ब्रेक है. नेक्स्ट ऐसे H3 साइज लिखा पोस्ट Soro स्लैश H3 पुणी BR दे परिबा. देन
डिस्ट्रिक्ट बालेश्वर /S3 तेणु मुझे क्लोज करने चाहूँगी ये भितर तेल आम लिखिदेवा स्लास बॉडी मुझे बी आर देली ये बी आर दे न्यू लाइन फ्रम क्रिएट होता तो स्लास बॉडी एवं जदि HTML आम स्टार्ट कर सॉरी ये मुझे छाड़ देती HTML स्टार्ट कर आम क्लोज करवा /HTML हम क्वेश्चन आसीपे जे तुम प्रोग्राम जो प्रैक्टिकल भी आसूँ ये क्वेश्चन राइट डेवलप ए वेब पेज विच डिस्प्ले योर एड्रेस एंड आम जो एड्रेस देले कि ये सब यार कलर आम चेंज करा जो हेडिंग दौरान हेडिंग आम कलर सब चेंज करा डिफरेंट कलर कर यार बैकग्राउंड कलर आम चेंज करा से आगू आगू गले आम तो पढ़ा जे आम जो हेडिंग टैग बा पैराग्राफ टैग अच्छी यार बैकग्राउंड कलर केमी गोटे चेंज कर से सब पढ़ियो तो आज ये डॉक्यूमेंट मु देखली HTML जहाँ हमें क्या कहते हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते एवं HTML लैंग्वेज यूज करके आम वेब पेजेस डेवलप कर वेब पेजेस भितर आम ये टाइप प्रोग्राम आम सब लिखिपर तो स्टूडेंट्स एठी आम किसी टैग यूज कर जोटा कि कंटेनर टैग कहते आउ कि कहते एम्प्टी टैग तो कंटेनर टैग टैग दी भाग भी होता ताको आम कहते टैग गोटे दी भाग गोटे है कंटेनर टैग आ गए है एम्प्टी टैग कंटेनर टैग कौन आ गए एम्प्टी टैग कंटेनर टैग ये किसी डाटा कंटेन कर अर्थात पेयरिंग टैग गुड़ी प्राय सब गुड़ी कंटेनर टैग हो जी सब पेयरिंग टैग अच्छे स्लास यूज करमती आम कहते कौटा कि एटा को गोटे H1 स्टार्ट करते /H1 दौरान हाँ तो एगुड़ी आम कौन कहते बॉडी बॉडी गोटे कंटेनर टैग बॉडी स्टार्ट कले तार स्लास बॉडी देले एगुड़ी सब कौन ना कंटेनर टैग ये टैग गुड़ी किसी डाटा कंटेन करियो किसी ना किसी लाइन बा टेक्स्ट या भीतर कंटेन करी रखुचे ताको आम कंटेनर टैग कहते किंतु किसी टैग होची एम्प्टी टैग जोड़ा किसी कंटेन करूना न्यू लाइन क्रिएट करछंदी कि गोटे बैकग्राउंड कलर आम दौरान से किसी आम कंटेन करूना ये न्यू टैग जो BR टैग आम देले तो BR टैग कौन न्यू लाइन ये तो ब्रेक BR स्टैंड्स फॉर ब्रेक द लाइन गोटे लाइन को ब्रेक करके गोटे न्यू लाइन क्रिएट कर कौन आम कौन से डाटा या भीतर रखुना से /BR भी दि जाए या दिया जाए /BR दिए तो एम्प्टी टैग गुड़ी कर आम स्लास ऑप्शन गुड़ी पाइबारे ये जो स्लास जो एंडिंग टैग गुड़ी पाइबानी ये कौन आम ओपनिंग टैग पाँच क्लोजिंग टैग पाँच ओपनिंग पाँच क्लोजिंग पाँच यार किंतु आम खाली गोटे टैग ही पाइबा ये ना जे यहाँ हूँ ओपनिंग टैग यहाँ ही क्लोजिंग टैग ये स्पेशल आउ किसी भाया टैग ना /BR आम दे पारे जे क्लोजिंग टैग ये कथा आम कर तो एगुड़ी को आम कहते एम्प्टी टैग क्लीयर है तो नेक्स्ट क्लास को आसले ये बाबद डिटेल्स पढ़ा आज ये था थैंक यू।